Hello students, I am teaching a chemistry paper 1 of your BSc of semester 2nd, and this is the part 7 lecture of unit 2nd, that is the concept of qualitative analysis and acid base theories. In last lecture we have already completed some of the acid base theories. In that we have completed the Lewis acid base concept, then atoionization concept, then Lux-Fluid theories. So these theories we have completed in last lecture. Now we have to study a new topic, that is the hard and soft acids and bases. So what is the hard and soft acids and bases? Which are the hard and soft acids and bases? Now we have to study. So HSAB concept. So hard and soft acid का क्या है? HSAB concept of Lewis acid and bases are classified into hard and soft acids and bases. That is HSAB concept. HSAB principle is based on the preferential bonding between metal ion and ligand. So ये क्या है HSAB principle? Based on bonding between metal and ion and ligands की. metal और ligands में कौन सी जो bonding से उस पर ये theory depend करता है. So Ehrland and Chatt and Davis in 1958 categorized the metal ions and ligands into two classes. So these three scientists, that is the Ehrland, Chatt and Davis, in 1958 उन्होंने क्या किया? कैटेगराइज किया है मेटल आयंस और लिगेंड्स को इनटू टू क्लासेस में. That is the class A and class B. So let's see one by one. Class A. The first one is the class A. So this class includes ions of alkali metals, alkaline earth metals, lighter transition element in higher oxidation state like a titanium 4 plus, chromium 3 plus, Fe3 plus, cobalt 3 plus and H plus. So class A में क्या include कौन से होते हैं? अल्कली यानी अल्कलाइन अर्थ मेटल्स जो कि लाइटर ट्रांजिशन एलिमेंट से इन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट लाइक टिटेनियम 4 प्लस, क्रोमियम 3 प्लस या आयन 3 प्लस या कोबाल्ट 3 प्लस एंड H प्लस. ये जो भी हायर ट्रांजिशन लाइटर ट्रांजिशन एलिमेंट जो भी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में है वो क्लास ए में इंक्लूड करते हैं. So these ions have a small size, possess high polarizing power and are more electropositive. So ये ions क्या है? Small size में रहते हैं और ये क्या हाई पोलराइजिंग पावर पॉजेस करते हैं और मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं. देयर आउटर इलेक्ट्रॉन्स और ऑर्बिटल्स आर नॉट इजीली डिस्टॉर्टेड. उनके इलेक्ट्रॉन्स आउटर इलेक्ट्रॉन्स या तो ऑर्बिटल्स क्या है? इजीली डिस्टॉर्ट नहीं होते. डिस्टॉर्ट मतलब वो डिस्टॉर्ट उनमें चेंजेस नहीं होते. मतलब the ligands which preferably combine with these metal ions are also placed in class A. So जो ligands combine with these metal ions वो also placed in class A. मतलब कि जो भी ligands इनके साथ combine होने वाले हैं वो भी class A में ही उसको place किया गया है by HSAB concept. So example of these are NH3, NR3, H2O and F fluorine, that is a fluorine. So these are the ligands which are placed in class A. So let's see the class B. So which are the class B elements? So this class includes ions of heavier transition metals and those in a lower oxidation states such as copper plus, Ag plus, Hg2 plus, palladium 2 plus and प्लेटिनम 2 प्लस. सो क्लास 2 में कौन से आयंस इंक्लूड होते हैं? जो कि हेवियर ट्रांजिशन मेटल्स हैं. वहां पर क्लास ए में लो लाइटर ट्रांजिशन मेटल्स होते थे, यहाँ पर हायर ट्रांजिशन मेटल्स है. एंड क्लास बी हैविंग अ लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट्स. मतलब लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट हो गए क्लास बी वाल के एलिमेंट्स में, जैसे कि कॉपर प्लस, Ag प्लस, Hg2 प्लस, प्लेटिनियम 2 प्लस एंड platinum 2 plus, palladium and platinum 2 plus. So these ions have a large size, less polarizing power and are less electropositive. So ये class B ions have large size, उनकी साइज large होती है, उनकी less polarizing power होती है और वो less electropositive होती है.
देयर आउटर इलेक्ट्रॉन्स और ऑर्बिटल्स आर इजीली डिस्टॉर्टेड, उनके आउटर इलेक्ट्रॉन्स इजीली डिस्टॉर्ट होते हैं. The ligands which preferably combine with class B metal ions are placed in a class B. So जो भी लिगैंड्स है कंबाइंड विद क्लास बी मेटल्स आयन के साथ जो भी कंबाइंड होने वाले उनको भी वी आर प्लेसिंग इन क्लास बी ligands. The example of these ligands are ligand R, that is phosphine, and R2S thioethers prefers to combine with palladium 2 plus, platinum 2 plus, and mercury 2 plus, which are the class B metal ions. So class B metal ions के ligands class B metal metal ions के साथ ही combined होते हैं, that is having low oxidation state and heavier transition metals. So these are the two types. So Ehrland and Chat and Davis have suggested that साइंटिस्ट इन तीनों साइंटिस्ट ने क्या सजेस्ट किया है, क्लास ए मेटल आयंस व्हिच आर मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव. So class A metal ions are more electropositive, tend to form their more stable complexes with ligands favoring electrostatic bonding. So वो क्या करेंगे, मोस्ट स्टेबल कॉम्प्लेक्स लिगैंड के साथ करेंगे, जो कौन से लिगैंड के साथ करेंगे, जो लोग लिगैंड्स हैविंग अ फेवरिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्डिंग, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्डिंग फेवर करते हैं लिगैंड उनके साथ मोस्ट स्टेबल मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयंस मेटल आयंस मतलब में मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल आयंस उनके साथ कंबाइन होंगे, स्टेबल कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेंगे. The stabilities of their complexes with halide ions decrease in the following order. So उनकी स्टेबिलिटी कॉम्प्लेक्सेस की halide ions के साथ कैसे डिक्रीज हो रही है. So this is the first one is the higher stabilities fluorine, then bromine and iodine. This is the iodine. So class B metals ions which are less electropositive. So जो less electropositive metals है having a relatively filled d orbitals. So उनके filled d orbitals filled होते हैं, form a more stable complex with ligands which possessing lone pairs of electrons have empty p orbitals available to accommodate some charge from d orbitals of metal ions. So जो लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स आयन है वो क्या है, रिलेटिवली फील्ड डी ऑर्बिटल के साथ मोस्ट स्टेबल कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है. सो लिगैंड्स, जो कि लिगैंड्स कौन से चाहिए उसके लिए, द लोन पेयर्स हैविंग लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैव एम्प्टी पी ऑर्बिटल, उनमें एम्प्टी पी ऑर्बिटल होने चाहिए. सो अवेलेबल टू अकोमोडेट सम चार्ज फ्रॉम डी ऑर्बिटल्स ऑफ मेटल आयंस. सो मेटल आयंस का मेटल आयंस पे जो चार्ज होता है वो क्या अकोमोडेट करना चाहिए सम चार्ज फ्रॉम डी ऑर्बिटल्स ऑफ मेटल आयंस से. सो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी इज अ रिवर्स ऑफ दैट फॉर क्लास ए मेटल कॉम्प्लेक्सेस. सो वो स्टेबिलिटी क्या होती है क्लास ए मेटल आयंस से अपोजिट होती है, रिवर्स में होती है. द स्टेबिलिटीज ऑफ क्लास बी मेट कॉम्प्लेक्सेस विथ हैलाइड आयंस शुड इंक्रीज इन द फॉलोइंग ऑर्डर. सो स्टेबिलिटीज ऑफ क्लास बी मेट कॉम्प्लेक्सेस विथ हैलाइड आयंस. सो क्लास बी के हैलाइड आयंस की कैसी स्टेबिलिटी होती है, फ्रॉम वेरी स्टेबल इज आयोडीन, देन ब्रोमीन, देन क्लोरीन एंड देन फ्लोरीन, दैट इज द रिवर्स ऑफ द क्लास ए. So these are the stabilities of class A and class B metal ions with halide ions. So Pearson's principle. So what is the Pearson principle and how it is how it's working? We are taking in this lecture. Pearson in 1963 suggested that the terms hard and soft acid or base can be used for class A and class B metal ions and ligands. So Pearson ने क्या 1963 में क्या सजेस्ट किया था, जो टर्म हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड और बेस कैन बी यूज फॉर क्लास ए एंड क्लास बी मेटल आयंस एंड लिगैंड्स. सो क्लास ए और क्लास बी मेटल आयंस के लिए कौन से टर्म यूज किए थे उसने, पियर्सन ने, the hard and soft acids or bases. Thus, in his classification,
the metal ions of class A are hard acids. So class A वाले क्या है? Hard acids and ligands, hard ligands of a class A are hard bases. So वो क्या है? Hard bases. Class A के hard bases. Similarly, metal ions and ligands of class B are soft acids and soft bases. So metal ions क्या है? Soft acids class B के and soft bases for ligand. So this one is the class A metals is hard acids. Class A ligands is hard bases. So these are the both are hard. And here is B, class B is soft acid and class B ligands is soft base. So these both are soft. So Pearson's classified most of the metal ions and ligands into hard and soft acid or base as given in table 7.4 and 7.5. So these are the table 7.4 and 7.5. So hard acids are these all the in 7.4, that is H plus, Li plus, Na plus, K plus, then beryllium 2 plus, Mg 2 plus, calcium 2 plus, strontium 2 plus. Then these all are the hard acids. These all are the hard acids. And then these are the soft acids. So palladium 2 plus, platinum 2 plus, cadmium Pb2 plus, these etc. These all the are soft acids. These are soft acids. Then the borderline acids. So classification of hard acid, soft acid, and then borderline between hard and soft. In between the hard and soft, that is the borderline. That is Fe2 plus, cobalt 2 plus, Ni 2 plus, then copper 2 plus, then bismuth 3 plus, No plus, etc. Then classification of bases. So basic classification of bases are hard bases are all of these NH3 or NH3, then chlorine, these are all the hard bases. Then H minus, cyanide minus, these are the soft bases. So then the borderline in between the hard and soft is the Pr minus, NO2 minus, SO3 2 minus, these all are the borderline bases. So these are the tables of classification of acid and classification of bases in hard, soft and borderline. According to Pearson, hard acids prefer to bind hard bases and soft acids prefer to bind with soft bases to form a complex. This is the Pearson's principle. So Pearson's principles क्या है? That is hard acid binds hard base and soft acid prefer to bind soft base. So this is the Pearson's principle. That means only hard acid bind करेगा hard base के साथ ही and soft acid bind करेगा soft base के साथ ही. The concept of hard and soft acids and bases can be illustrated by the following Lewis acid base reaction. So A plus B, acid plus B form a complex AB. So the complex AB is the most stable when A and B are either both the soft acid and base or both the hard acid and base. मतलब दोनों भी soft होने चाहिए या तो hard होने चाहिए. The complex is least stable when one of the reactant is very hard acid or a base and other is very soft acid or base. So complex कब unstable होगा, least stable होगा जब एक hard acid होगा और एक दूसरा soft base होगा. So that is या तो उसके opposite. Pearson principle is only an approximate qualitative prediction of the relative stabilities of the for the complexes and it is not the theory or any explanation of the observation. So Pearson principle क्या है? Qualitative
प्रिडिक्शन फॉर रिलेटिव स्टेबिलिटीज, मतलब रिलेटिव स्टेबिलिटी के ऊपर पूरा का वो प्रिडिक्शन पर रिलेटिव कितनी स्टेबिलिटी उसके रिलेटिव्स में एक दूसरे के, दैट इज डिपेंड्स ऑन दिस एंड इज नॉट थ्योरी ऑफ और एनी एक्सप्लेनेशन ऑफ द ऑब्जर्वेशन, मतलब ये कोई भी थ्योरी या ऑब्जर्वेशन नहीं है, ये ओनली रिलेटिव स्टेबिलिटी का क्वालिटेटिव प्रेडिक्शन है. So theories of hard and soft acids and bases. So several explanations have been put forward to provide theoretical basis to Pearson principle of hard and soft acids and bases. So ionic, first one is the ionic and covalent bonding. So Pearson principle का पहला क्या है? Theory ionic and covalent bonding. So according to this concept, hard interactions involve ionic bonding and soft interactions result in covalent bonding. मतलब जहां पर hard interaction होगे वो क्या होते हैं? आयोनिक बॉन्डिंग में, एंड जहां पर सॉफ्ट इंटरेक्शंस होंगे वो क्या, वहां पर क्या होगी? कोवैलेंट बॉन्डिंग. So it is expected that a small size and highly charged metal ions should favor in ionic bonding with hard bases of class A. So जो भी small size है और highly charged metal ions है वो क्या है? फेवर करेंगे ionic bonding की. Why? Because it is having a hard bases of class A. तो वो हार्ड होंगे. So Miskono and his co-worker in 1967 have developed an equation which correlates hardness and softness. So Miskono and his co-worker उन्होंने क्या किया 1967 में डेवलप इक्वेशन, उस पर इक्वेशन किया है कोरिलेट करने के लिए हार्डनेस और सॉफ्टनेस का कोरिलेशन करने के लिए. सो पी के इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ के प्लस अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई प्लस गैमा. सो वेयर के इज instability constant. So K is instability constant of the complex. Then X and Y are parameters of metal ions. So X and Y क्या है? Parameters of metal ions. Metal ions के parameters हैं. And alpha and beta are parameters of ligands. So alpha and beta क्या है? Parameters of ligands. The parameter of Y gamma is for just adjustment so that all the pk values lie on the same scale. So ये gamma किसके लिए लिया है हमने? For adjustment so that pk values lie on the same scale. So this is the ionic and covalent bonding. For hard acids, the value of Y is found to be greater less than 2.8, and for soft acids it is greater than 3.2. For borderline acids, the value of ranges between 2.8 to 3.2. The values of increase from hard base to soft base. So value कैसी होगी? Hard base to soft base increase होती जाएगी. So OH is equal to 0.44, NH3 is 1.08, then Cl minus is 2.49 and Br minus 5.58 and I minus is 7.17. So फ्रॉम हार्ड बेस टू सॉफ्ट बेस क्या हो रहे हैं? वो वैल्यूज इंक्रीज होते जा रहे हैं. सो सेकेंड वन इज द पाई बॉन्डिंग. सो Mulliken's 1955 and Chat 1956 have explained soft interaction on the basis of bonding. Mulliken और Chat ने explain किया है soft interaction on the basis of bonding. So according to this theory, the soft acids have loosely held d electrons. So इस theory के according क्या है? Soft acid have loosely held d electrons which can form pi bonds by donating a suitable ligands having a empty d orbitals. So according to this theory क्या है? Soft acid have loosely held d electrons. So वो क्या form करेगा? Pi bonds by donating to suitable ligands. तो suitable ligands को वो donate करेगा having a d orbital, जो इस ligand में d orbitals होंगे. The presence of d orbitals on the ligand except CO helps to strengthen the pi bonding. So presence of d orbitals on the ligands क्या करता है? strength increase करता है bonding की. So applications of HSAB concept. So Pearson principle finds many useful applications.
let's see by one. First one is the relative stability of the complexes. So relative stability of the complexes having making use of Pearson's rule, it is possible to predict the relative stabilities of the complex. So Pearson का rules का use करके we can find out relative stability of the complex. Example of it is expected that AgI2 is more stable than AgF2 minus because Ag plus is soft acid and I minus is soft base. Hence they combine to give stable AgI2. F minus is hard. So F minus is hard base and Ag plus is soft acid. Hence AgF2 minus is less stable. So ये क्या होगा? Less stable होगा because in AgI2 both are soft acids and soft bases, but in AgF2 one is soft acid and other is hard base. So class A metal, class A ligands, that is hard acids, hard bases, that is gives hard. Then class B metals, soft acids, soft bases gives soft. So these are the relative stabilities. Similarly, out of the two complexes, cadmium NH3 4 plus 2 positive and cadmium cyanide 4 2 positive. The latter is expected to be more stable because both the cadmium 2 plus and cyanide minus are soft acid and soft bases. So these both are cadmium 2 plus and cyanide minus are soft acid and base. That is why it is more stable as compared to cadmium NH3 for 2 plus. Second one is the occurrence of minerals. So application is occurrence of minerals, that is acids as Mg2 plus, calcium 2 plus and Al3 plus occur in the nature as MgCO3, calcium carbonate and Al2O3 respectively. This is because cations, that is the acids, and anions bases are both hard. तो cations and anion both क्या है इसमें hard है. So occurs in nature as Mg calcium and Al3 plus in magnesium carbonate, calcium carbonate and Al2O3. These cations, that is acids, are never found in nature as a sulfide. So ये cations जो भी है वो क्या ऐसे नेचर में एज अ सल्फाइड्स S2 माइनस सल्फाइड्स नहीं ऑकर करते. So S2 minus is a soft base. On the other hand, soft acids such as copper plus, Ag plus, Ag2 plus occurs as sulfides. But ये जो तीनों है Ag, copper and Ag, ये क्या occur करते हैं as a sulfides in a environment. The borderline acids such as Ni2 plus, copper 2 plus and lead 2 plus occur in nature as a carbonate and sulfides. So borderlines जो भी है acids जैसे कि Ni, copper and lead 2 plus occur in nature as carbonate and sulfides. ये carbonate and sulfides में occurs करते हैं. Third one is the poisoning of metal catalyst. So metal catalyst को poison नहीं हो. Soft acids like palladium and platinum, which are a good catalyst, are easily poisoned by soft bases like carbon monoxide, olefin ligands containing phosphorus or arsenic. So जो भी soft acids है palladium, platinum, ये क्या है? Good catalyst है. So ये easily poisoned होते by soft bases like carbon monoxide, olefins ligands, so containing phosphorus or arsenic. Thus carbon monoxide and olefins are strongly absorbed on the surface of the metal and block the active sites, but these catalysts are not affected by hard bases such as fluorine, oxygen, nitrogen, etc. So carbon monoxide and olefins, so carbon monoxides and olefins are strongly absorbed on the surface of the metal and block the active spaces. So ये absorb करते हैं surface of the metals पे और वो block करते हैं active sites को. But these catalysts are not affected by hard bases such as fluorine, oxygen, nitrogen.
सो ये जो अगर हमने लिया फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन ये हार्ड बेसिस जो भी लिए उनके साथ, सो वो क्या होते हैं, कैटलिस्ट को अफेक्ट नहीं करते. So fourth one is the course of chemical reactions. So this is the first reaction and this is the second reaction. H plus plus CH3 HgOH gives H2O plus CH3Hg plus. So this is the first equation. Then the second H plus plus CH3 HgSH gives H2S plus CH3Hg plus. So on the basis of HSAB concept, we can say that reaction 1 should move towards right as a hard acid H plus is combining with hard bases OH minus. So यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो हार्ड एसिड है वो इसके साथ कंबाइंड हो रहा है. सो क्या करता है, शुड मूव टुवर्ड्स राइट, मतलब ये इस साइड में जाएगी, ये रिएक्शन राइट साइड में ही जाएगी. क्यों, हार्ड एसिड H plus combined with OH minus. Then reaction of second should move towards left as the soft acid CH3Hg plus, मतलब ये क्या है, सॉफ्ट एसिड है, is combining with soft base that is the SH. So ये क्या है, SH के साथ रिएक्ट कंबाइंड होगा, दैट इज वाई ये क्या होगी, रिएक्शन तो इस साइड में जाएगी, लेफ्ट साइड. सो LiI plus CSCF gives LiF plus CSI. So this reaction should easily move towards right as a soft cesium. ये कहाँ पर होगी, ये राइट में ही जाएगी. So cesium prefers to combine with soft I minus. Cesium is soft and iodine I minus is also soft. So cesium और ये iodine both are combined and gives CSI. And Li plus prefer to hard F minus ions. So जो Li है वो प्रेफर करेगा F minus ion को, ये वाले. So hard and soft combined हो रहे, that is why the reaction proceed to the right side. So relative strength of hydroacids of halogens. So Hx plus H2O gives H3O plus X minus. The X is fluorine, bromine, iodine. So hard acid H plus combines readily with hard bases F minus. So H plus combine होगा readily with F minus. मतलब X यहाँ पर हमने लिया है, X की जगह पर F minus ऐसे कंसिडर किया था, and a form a stable HF. तो ये क्या है, HF फॉर्मेशन होगा यहाँ पर. Hence in aqueous solution the reaction with HF does not move readily towards right and therefore HF is weak acid. So क्या होगा, aqueous solution में reaction of HF does not move readily towards right and therefore HF is weak acid. तो वो क्या, राइट में रिएक्शन नहीं हो रही है, that is why HF is weak acid रहता है वो. Therefore, the strength of hydroacids of halogen in the order HI is greater strength than HBr and HCl, and last one is the HF. So, this is the strength of hydroacids of halogens. So, that is the relative strength of hydroacids of halogens. So, thank you students. Here we have completed HSAB concept.